Welcome to physics class. So we are learning about this magnetic materials, chapter number 11 from class 12th standard. Name of today's topic is Origin of Magnetism in Materials. You know that atom is made up of nucleus and electrons revolve around the nucleus. कई एटम्स से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स. These are nothing but water molecules. जिस तरह एक एप्पल में कई हजार एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और आप अगर उसका एक पार्टिकल भी चखे तो इट विल टेस्ट लाइक एन एप्पल, isn't it? उसी तरह कोई मैग्नेटिक मटेरियल भी कई एटम्स से मिलकर बना होता है, और मैग्नेटिक मटेरियल में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके एक सिंगल एटम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन में भी सेम प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. Just you see this, so electron behaves like a small bar magnet. उससे बड़ा होता है atom. Atom behaves like a little bit big bar magnet, and उससे बड़ा होता है molecule. Molecules का जो area होता है उसे हम कहते हैं domain. डोमेन उससे बड़ा मैग्नेट बिहेव करता है, एंड एज अ होल मैग्नेटिक मटेरियल जो भी रहेगा, मैटर जो भी रहेगा, इट बिहेव्स लाइक अ रियल बार मैग्नेट, बिग बार मैग्नेट. ये इस तरह से डोमेन्स बनते हैं, और हर डोमेन इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट. इसकी थ्योरी हम आगे देखेंगे. Are different domains having resultant magnetic moments in different directions. तो हमने देखा मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मूवमेंट का ओरिजिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है. सो वी विल स्टडी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कितना बनता है एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है और किन चीजों पर ये डिपेंड करता है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो स्टूडेंट्स, हम बचपन से ये फिगर देखते हुए आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अतराफ में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, isn't it? तो इलेक्ट्रॉन की मोशन दो तरह की होती है. एक वन इज कॉल्ड एज स्पिन मोशन, वो उसके ही खुद के एक्सिस पर मोशन करता है, और दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मोशन. और ऑर्बिट में घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मोशन. तो इसके दो मोशन की वजह से दो तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. वन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन, एंड अनदर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, isn't it? तो इस दो तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, दैट लूप एक्ट्स एज करंट लूप, एंड एल यानी एंगुलर मोमेंटम जो है उसका डायरेक्शन यहाँ पर बताया गया है. So we will start doing some mathematical calculations for calculating the total value of magnetic dipole moment due to an electron revolving around the nucleus, isn't it? So we know that the orbit behaves like a current loop, or the value of current is given by ei is equal to e upon t. Okay, let us call this as equation number 1. Now the total distance covered by the electron t is equal to, we know the formula for time period, that is equal to distance upon velocity. अब एक rotation में electron कितना distance cover कर रहा है, that will be equal to 2 pi r, that is circumference of the circle. So t is equal to 2 pi r upon velocity v, isn't it? So I put this value of t in equation number 1. Okay, I is equal to e by t में t का value put करना है आपको 2 pi r upon v. So finally
we get current I is equal to EV upon 2 pi R. This is the main equation of I. जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है इन द ऑर्बिट तो इट बिहेव्स लाइक अ करंट लूप सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज गिवन बाय कैपिटल M is equal to I is the current into A, that is area, where I is the current and A is the area bounded by the. So just now we have calculated value of I and put this value in formula of M is equal to I into A. I की जगह हम रखेंगे यहाँ पर EV upon 2 pi R and area of circle we know that it is given by pi r square. ये दोनों अगर हम values रखते हैं तो in equation 4 we get EV upon 2 pi R instead of I and instead of A we can write here pi r square. तो यहाँ पर pi will get cancelled. One R will get cancelled. Final formula for magnetic moment we will get here EVR upon 2. Getting? For this electron orbital angular momentum will be L is equal to mvr, isn't it? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई भी चीज जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है तो उसमें मोमेंटम प्रोड्यूस होता है. लीनियर मोमेंटम रहा तो उसका वैल्यू आता है मास इनटू वेलोसिटी. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, isn't it? और इसका क्या फॉर्मूला है? I into omega. From that we have got L is equal to mass of electron into V into R. Now multiplying and dividing this above equation, ये जो equation number 5 है उसको हम multiply और divide कर रहे हैं mass of electron से. So we get M is equal to E upon 2 ME. हमने rearrange किया ये equation को E upon 2 ME into ME into VR. Okay. Now this term E upon 2me in the bracket is called as gyromagnetic ratio. ये बहुत important quantity है and its value is comes as 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kilogram, जहाँ पर E is the value of the charge और me is the mass of the electron. ये अगर values आप put करेंगे तो आपको finally you will get same value 8.8 into 10 raised to 10 and unit is coulomb per kilogram. Now, according to second postulate of Bohr's theory of hydrogen atom, L, you know that magnetic moment is given by NH upon L is equal to NH upon 2 pi. अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 6 में पुट करेंगे m orbital is equal to E upon 2 me into instead of mvr we are writing here capital L. ठीक है और कैपिटल L का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 6 देन वी गेट m orbital is equal to E upon 2 me into instead of L we can write here NH upon 2 pi. So finally we get this formula m orbital is equal to NEH upon 4 pi into me. Okay. So finally equation 7 में अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमको m ऑर्बिटल मिलता है EH upon 4 pi into me, isn't it? अब h क्या है यहाँ पर? Planck's constant. E is the charge of the electron, me is the mass of the electron. अगर ये सारी वैल्यूज अगर हम रखें तो जो कांस्टेंट मिलता है हमने उसको एक टर्म नाम दिया है दैट इज कॉल्ड एज बोहर मैग्नेटॉन. और बोहर मैग्नेटॉन का वैल्यू कितना होता है अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो विल गेट इट्स वैल्यू एज 9.274 into 10 raised to minus 24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. ओके. So in today's lecture, we have seen origin of magnetism. Then we have calculated value for magnetic moment of an electron. And after that, we have seen the values of two constants, that is gyromagnetic ratio and what is Bohr magneton and what is its value. Thank you. So we are dealing with a new topic, that is magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom.
एटम जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करता है तो यहाँ पर दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वजह से दिस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट और इसमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिज्म कितना प्रोड्यूस होता है, दैट वी आर कैलकुलेटिंग। एंड व्हाट डू वी मीन बाय मैग्नेटिक मोमेंट? इट इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ दैट हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन कैन क्रिएट। अगर इलेक्ट्रॉन एक राउंड यहाँ पर कंप्लीट करेगा इन अ सर्कल, देन हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन? It is given by 2 pi r. So velocity will become v is equal to 2 pi r upon t. We are having the formula for current as I is equal to E upon t. So put this again, t is given by 2 pi upon omega, isn't it? So let us call this equation number 2. Okay, then therefore I is equal to E upon t. t की जगह हमने लिखा है यहाँ पर 2 pi upon omega. So I is equal to E omega upon 2 pi. We know that this omega is given by, omega is equal to V by R. Put this value of omega here. We get I is equal to EV upon 2 pi R. Isn't it? EV upon 2 pi R. Now the magnetic moment, orbital magnetic moment due to this loop is given by M is equal to I into area. We have calculated value of I as EV upon 2 pi R. Area of the circle is given by pi r square. तो यहाँ पर एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 r will be cancelled here. So the final formula we will get M is equal to EVR अपॉन 2. अब ये इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ME से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल ME इंटू EVR अपॉन 2ME. अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, E अपॉन 2ME, E अपॉन 2ME इंटू what is left, MEVR is equal to capital M. Now this E upon 2ME, ME क्या है यहाँ पर? Mass of electron. So all these terms are constants. M is equal to E upon 2ME into MEVR. What is this? It's a value of angular orbital angular momentum, which is denoted by capital L. So E upon 2ME is constant, and this value is called as gyromagnetic ratio. That is a constant term and is called as gyromagnetic ratio, and its value comes as 8.8 into 10⁻10 coulomb per kilogram. It means magnetic movement depends on angular momentum only, angular momentum of electron.